Hello students, good morning. I hope all of you are fine. So students, this is a poem. Once I saw a little bird. So let us start with the poem. Okay students? So students, you have to recite the poem. मैं poem बोलूंगी और आपको भी मेरे साथ साथ ये poem बोलनी है. Okay? Once I saw a little bird come hop, hop, hop. I cried, little bird, will you stop? Stop, stop. I was going to the window to say how do you do, but he shook his little tail and away he flew again. Once I saw a little bird come hop, hop, hop. I cried, little bird, will you stop, stop, stop? I was going to the window to say how do you do, but he shook his little tail and away he flew. So students, आप सबको ये poem learn करनी है. Okay students? So now let us understand the poem. Once I saw a little bird come hop, hop, hop. I cried, little bird, will you stop, stop, stop? So in the first stanza, the boy is saying that once he saw a little bird and he told the little bird to jump and come near him and sit beside him. अभी एक बार क्या हुआ इस पैराग्राफ में बॉय क्या बोल रहा है उसने एक बार एक लिटिल बर्ड को देखा और उसने उस बर्ड को देख के क्या बोला कि बर्ड कैन यू प्लीज जंप क्या तुम जंप कर करके हॉप करना मतलब जंप करना तो क्या तुम प्लीज हॉप करके मेरे पास आके बैठ सकते हो एंड ही क्राइड मतलब शाउट करना जोर से चिल्लाया लिटिल बर्ड विल यू प्लीज स्टॉप एंड स्टे विद मी उसने बर्ड से रिक्वेस्ट की कि बर्ड प्लीज स्टे एंड स्टॉप एंड प्लीज स्टे विद मी मतलब तुम यहाँ रुक के प्लीज मेरे पास रह जाओ तो आप पिक्चर में देख सकते हैं ये जो बर्ड है हॉप मतलब ये जो रैबिट है वो जंप कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हॉप करना तो क्या है once I saw a little bird come hop 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 I cried little bird will you stop 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 okay students I hope आपको फर्स्ट स्टेंजा समझ में आ गया हो I was going to the window to say how do you do but he shook his little tail and away he flew. So here the boy is saying that he was going to the window to ask the bird that how is he, but the bird shook his tail and flew away. अभी इस पैराग्राफ में बॉय क्या बोल रहा है कि बॉय जहाँ पे बर्ड बैठा था बर्ड कहाँ बैठा था विंडो के पास बैठा था तो बॉय भी उस विंडो के पास गया वो विंडो के पास क्यों गया क्योंकि उसको बर्ड को पूछना था कि भाई हाउ डू यू डू तुम कैसे हो क्या कर रहे हो वो बर्ड से बातें करना चाहता था पर बर्ड ने क्या किया उसकी टेल को शुक करना मतलब टेल हिला के ये जो बर्ड है उसके नीचे जो टेल सर्कल किया हुआ है उसको क्या बोलते हैं टेल तो बर्ड उसकी टेल को हिला के शुक करके वहां से भाग गया उड़ गया तो बॉय को बहुत सैड फील हुआ बिकॉज उसको तो बर्ड को अपने पास रखना था बर्ड से बातें करनी थी और बर्ड्स जो होते हैं आपने देखा होगा हम अगर बर्ड्स के क्लोज जाते हैं तो वो हमसे डर जाते हैं और वो भाग जाते हैं तो उस बर्ड को भी उस बॉय से डर लग रहा था इसलिए वो भी वहां से भाग गया ओके स्टूडेंट्स so students now we'll learn the new words okay so हमारा first new word क्या है bird मतलब आप सबको पता है और ये कौन सा bird है pigeon और bird का spelling क्या है B-I-R-D bird okay so our next new word is hop मतलब jump करना ये rabbit क्या कर रहा है jump yes and what is the spelling of hop H-O-P hop our next new word is stop stop मतलब रुक जाओ stop का spelling क्या है S-T-O-P stop okay and our next new word is tail tail मतलब bird की जो नीचे की पूंछ होती है उसको हम क्या बोलते हैं tail और tail का spelling क्या है T-A-I-L tail okay our next new word is window window मतलब खिड़की हमारे घर पे जो खिड़की होती है उसको क्या बोलते हैं window
and the spelling of the window is WINDOW, window. Okay students, आपको ये poem और new words दोनों learn करनी है और इसकी exercise है वो आपको notebook में लिखनी है. Okay students, thank you students.